Hello dear students, welcome to MediMantra. In today's session, we'll talk about if somebody asks you to conduct a normal vaginal delivery, how will you conduct? Okay. So always remember the most common position is left occipital transverse or left occipital anterior. तो आइए बात कर लेते हैं आज कि लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स अगर है तो कैसे डिलीवर कराना है. ठीक है. So the way I am speaking like this only you can speak in the exam and always try to revise with your friends more and more. Okay. So first comes engagement. Okay. So hold the baby like this and your pelvis in anatomical position as I had told in my previous videos. Okay. So first engagement. So you will tell कि in left occipital transverse position the head is said to be engaged when the biparietal diameter has crossed the pelvic brim. Okay. Then comes descent. So for descent आपको 4 points हमेशा बोलना होता है. What are the 4 points? You should say कि with an average sized baby with good uterine contractions with good amount of liquor and an adequate size pelvis descent is a continuous process. तो हमारे 2 points तो हो गए. अब तीसरा point आता है flexion. अब why flexion will occur? Now see over here. What is Newton's third law? Newton's third law says to every action there is a reaction. So अगर हम बेबी को पुश कर रहा है यूट्रस नीचे की तरफ, so this is an action. So pelvic floor will give a counter traction. So that will be the reaction. So to this action pelvic floor has given a reaction. तो हम ऐसे मान लेते हैं कि ये हेड है और ये हेड नीचे जा रहा है, पेल्विक फ्लोर ने उसको पुश कर दिया. नाउ पेल्विक फ्लोर उसको इधर से भी पुश करेगा, पेल्विक फ्लोर इसको इधर से भी पुश करेगा. आई एम टॉकिंग अबाउट लिवेटर एनाई विच इज द मसल ऑफ द पेल्विक फ्लोर. तो अगर वो इधर से पुश किया, इधर से पुश किया तो नेट फोर्स क्या होगा? क्या हेड इधर जाएगा कि हेड इधर जाएगा? इधर जाना मतलब क्या हेड फ्लेक्स हो जाएगा कि हेड एक्सटेंड हो जाएगा? नाउ रिमेंबर द टू लिवर आर्म थ्योरी. When we used to be in schools and we used to read physics, what we used to study कि एक सीसॉ है यहाँ पे, अगर सीसॉ का फल्क्रम यहाँ पे है मान लो, तो ये डिस्टेंस कम है एंड ये डिस्टेंस ज़्यादा है, तो a small child can sit over here and if a fat man is also sitting here, if the small child sits here then the fat man can be pulled up. This is because the theory of torque. Torque क्या है? Force into your distance. तो अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो कम फोर्स लगाने पे भी आप इनको उठा सकते हो. ओके. ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर किसी भी साइड में डिस्टेंस कम है तो फोर्स ज़्यादा चाहिए उसको उठाने के लिए. द सिमिलर इज ट्रू इन फीटल हेड ऑल्सो. सी जो स्पाइन होता है वो तो एक साइड में होता है, ऑक्सीपुट के तरफ होता है एंड सिंसिपुट इज फार अवे फ्रॉम द स्पाइन. सो इफ द फल्क्रम इज द स्पाइन देन यू रिमेंबर कि इस साइड का जो लिवेटर एनाई है वो भी सेम फोर्स दे रही है, इस साइड का लिवेटर एनाई भी सेम फोर्स दे रही है, बट दिस साइड का लिवेटर एनाई इज फार अवे फ्रॉम द फल्क्रम, सो इस साइड का टॉर्क ज्यादा होगा. तो इट इज बट ऑब्वियस दैट द हेड जो सिंसिपुट वाला साइड है वो उसमें टॉर्क ज्यादा प्रोड्यूस होगा, तो ये ऐसे ऊपर आ जाएगा. तो हेड हमेशा फ्लेक्शन होता है. So the third point was flexion. Why flexion occurred? I told you. One is Newton's third law and the second is by two liver arm theory. Clear है? अब next हम जाते हैं head flexion हो गया. So when head flexion हो गया तो इस side के levator ani will not be able to touch the head so nicely as this side. वो तो ज़्यादा नीचे है, occiput is below. So occiput वाले side का जो levator ani है that will be more gripping on this. Now what is the direction of levator ani? Levator ani का direction है, it gets originated from the pelvis, okay, from the pubic part, ठीक है, pubic and ilium, and it goes and gets attached to the sacrum and coccyx, पीछे जाके attach हो जाता है. तो direction of the fibers of levator ani are downwards and backwards, okay. So अगर जब वो counter traction देती है तब वो head को क्या करती है? Upwards एंड फॉरवर्ड्स पुश करती है. ओके, रिमेंबर, समझ में आ गया? क्योंकि इसका डायरेक्शन बैकवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स है, तो जब वो काउंटर ट्रैक्शन देगी तो उल्टा डायरेक्शन में देगी, तो फॉरवर्ड्स एंड अपवर्ड्स डायरेक्शन में देगी. तो अगर अपवर्ड वाला तो उसके वजह से तो फ्लेक्शन हो गया, बट फॉरवर्ड भी तो पुल कर रहा है,
तो इस साइड वाला भी फॉरवर्ड पुल कर रहा है, ऑक्सीपुट वाला साइड भी फॉरवर्ड पुल कर रहा है, बट ऑक्सीपुट वाला levator ani is more in touch with the pelvic floor than the sinciput. So the occiput wala jo levator ani hai, it will slowly keep bringing the occiput anteriorly. So occiput anteriorly aa jayega, तो there will be internal rotation. So if there is left occipital transverse, then 1/8 and 2/8. So there will be 2/8 rotation of the head anteriorly. So occiput will come in front. So at the same time, when the occiput has come to 8 anteriorly, then at the neck of the fetus there is 90-degree torsion. But a neck can sustain only 45-degree torsion. So the neck will come in this direction. That is, it will come in the लेफ्ट ऑब्लिक डायमीटर. लेफ्ट ऑब्लिक डायमीटर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि लेफ्ट साइड का जॉइंट है एंड राइट साइड का इलियोप्यूबिक एमिनेंस है. तो डिपेंडिंग अपॉन जिस साइड का जॉइंट से ले रहे हैं उस साइड का ऑब्लिक डायमीटर. सो नाउ शोल्डर्स आर इन लेफ्ट ऑब्लिक डायमीटर. देन कम्स क्राउनिंग. When head has come out of the vulva, head is visible and the head is not retracting back when the forces or the contractions are over, then head is said to be crowned. So crowning हो गया. उसके बाद head delivers by extension. So head gets delivered by extension. Then there was a 45-degree torsion on the shoulder. So because of which there will now since this head is out of the pelvis, this will turn 45-degree in the opposite direction so as to relieve the torsion on the neck. And this movement is called restitution because the neck is now rested. Then the shoulders have to come out of the pelvis, and so the shoulders rotates in such a way that the shoulders come in anterior posterior diameter, which is visible as external rotation of 45-degree of the head. Then the shoulders get delivered by lateral flexion. So you have 9 cardinal points. So let me revise once more in exam what you have to say. Head is engaged in left occipito-transverse diameter such that the transverse diameter of the head has engaged and it has crossed the pelvic brim. Then with good uterine contraction, average sized baby, good amount of liquor and an adequate pelvis, descent is a continuous process. Then by Newton's third law and by two lever arm mechanism, the pelvic floor is also giving a counter traction, because of which there is flexion of the fetal head. Since there is flexion, the occiput is more in touch with the levator ani, and so occiput will slowly come anteriorly as internal rotation. So the internal rotation of 90-degree or 2/8 of a circle has occurred. Since the neck can sustain a torsion of only 45 degrees, so neck comes in the left oblique diameter. There is crowning when the head comes to the vulval outlet and it does not retract back when the forces are over. Then head is borne by extension. After that, there is a restitution of 45-degree in the left side so as to relieve the torsion on the neck. After that, the shoulders come in the anteroposterior diameter, and which is visible as external rotation of the fetal head. The occiput again comes in the left direction. Then the trunk is borne by lateral flexion. So for more information, remain subscribed to our channel Medi Mantra.